are going to search any topic in our search engine like Google, Chrome. So the algorithm behind run and provide you the similar result. There are so many results are provided by an algorithm. And next one point is social media. In social media platform, we are using so many types of algorithm. Like we are always watching the reel, scroll the reels in our Instagram account, and there is a algorithm is run so that we watch the similar reels again and again. Algorithm analyze our behavior, our interest, our preference. After that, the algorithm provide you the same type of reels. Like social media platform utilize algorithm to create content for user. These algorithms analyze the user behavior, preference, and interaction to deliver personalized feeds. For instance, Facebook and Instagram use algorithm to determine which post to display in a user news feed, enhancing user engagement and experience. Also, you clear this point. And another one point is e-commerce. E-commerce website like our Amazon, Flipkart, Meesho. There are so many types of e-commerce website. Algorithms are integral to e-commerce platform, providing personalized recommendation to the customers based on their browsing and purchasing history. That means we all every time search anything. We all anytime search anything to any e-commerce website. Like if in today there is a sale on Flipkart or Amazon, Diwali sale, and in near about Diwali, we all are purchase anything, our use things. If we are going to purchase any laptop, any buds, earbuds, or anything, what do you like? So you are going to search in Amazon, in Flipkart, and when you close the application and you realize Amazon and Flipkart and e-commerce website post notification to your application. The new product is released. This one product is new in the Flipkart. The similar type of product according to your interest and healthcare. The second another point is healthcare. In healthcare, algorithms are used for diagnostics, treatment planning, and patient management. So, if any one of the previous patients have the same problem and your case is also the similar for the previous one, so that the some algorithm is run behind the machines so that they find out the what is the diagnostics are available according to your test. जिस भी तरह की आपके पास बीमारी होगी, आपको कोई बीमारी है, हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे काफी सारी ऐसी मशीन रखी होती है जो कि हमें बताती है कि आपको किस तरह की बीमारी है। वो बीमारी किसी को पहले हुई है तो उनके अंदर कुछ ऐसी निशानियां पाई गई है जो कि आपसे मिलती जुलती है 90%, 80%, so that there is a chance you also have the same problem. Hope so you are understand what is the use of algorithm in our daily life. Next is
fundamental of the analysis of algorithm efficiency. How do we find out that the algorithm which we design, which we apply is efficient for you to solve a particular problem? That means कि आपने जो भी एल्गोरिथम उठाई है, जो भी एल्गोरिथम आप लोग यूज करने वाले हो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, या फिर जो भी प्रॉब्लम आप लोग डिजाइन करते हो, क्या वो सच में इफेक्टिव है आपकी प्रॉब्लम के लिए, या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी एल्गोरिथम आप लोग वहां पे यूज करोगे, राइट? सो व्हाट इज द एफिशिएंसी? एल्गोरिथम एफिशिएंसी इज ए क्रिटिकल concept in computer science reflecting how effectively an algorithm utilize resources, particularly time and space. Resources, that means if we have limited resource and we have an algorithm, so that there is a need for extra resources for solving a particular problem. If there is a need for any another sources, then maybe the algorithm is not efficient for the solve problem. And the particularly time and space. In every algorithm, we talk about time and space. Time and space means how much time is taken by a algorithm to solve a particular problem, and how much space is taken by a function or algorithm to solve a particular problem. Now, when evaluating an algorithm, we analyze its performance based on the size of the input. That means, what is the size of the input? Suppose we using an algorithm and we increase the size of the input. So there is a need for extra resources. If there is need for extra resources, then the given algorithm is not efficient for the particular problem. The goal is to understand how the running time and memory requirements change as the input size increasing. The goal is to understand, हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग अपना टाइम और अपनी मेमोरी बचाना चाहते हैं, अगर हम इनपुट साइज हम अपना बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या उतना ही टाइम हमें लग रहा है और उतना ही स्पेस हमारा लग रहा है जितना कि हमने पहले प्रीवियस किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में लिया था? हमारे पास दो चीजों को हमने सोल्व किया और हमने इंक्रीज कर दिया उसका साइज, तो क्या सेम टाइम और सेम अमाउंट ऑफ टाइम एंड सेम अमाउंट ऑफ स्पेस आर यूज? अगर ऐसा है तो हमारी एल्गोरिथम ठीक है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज we are going to choose another algorithm. An efficient algorithm can handle large input without a proportional increases in resources consumptions. That means अगर हम लोग इनपुट का साइज बढ़ा देते हैं और एल्गोरिथम हमारा बहुत अच्छे से काम कर रही है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बिना किसी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के, कोई ज्यादा रिसोर्स नहीं कर रहे हैं, जितना हमारे पास पहले रिसोर्सेज थे सेम रिसोर्स का हम लोग वहां पे यूज कर रहे हैं और हमने साइज बढ़ा दिया है, तो हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। जो हमारी आउटपुट आनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द न्यू इनपुट, बेस्ड ऑन द न्यू इनपुट, तो वो हमारे लिए एल्गोरिथम हमारे लिए काफी अच्छी है। रो what is the time complexity and space complexity? There are two metrics measure algorithm efficiency. हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को जानने के लिए दो मेजरमेंट हम लोग लेकर के चलते हैं। पहला हमारे पास होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकंड वन इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? Alright, we discuss what is time complexity. This measure the amount of time at algorithm. How much time taken by an algorithm to solve a particular problem is called time complexity. Okay. This measure
the amount of time an algorithm taken to complete as a function of the input size. It is often expressed using big O notation, which describe the upper limit of the running time in worst case scenario. Common time complexity include all right. So, big O notation. Time complexity is the amount of time taken by the algorithm. कि हमारी एल्गोरिथम को कितना ज्यादा टाइम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लग रहा है. The same thing, if we increase the size of input, is also increase the time of solving the particular problem. अगर आपकी एल्गोरिथम का साइज भी बढ़ रहा है इनपुट के साथ, so there is a problem in our algorithm. And big O notation. What is big O notation? That means we expect 2 minutes for solving a given problem, but our algorithm taken 5 minutes. Then we can say our algorithm is not good for this problem. And we always talk about the worst case scenario. Worst case scenario. ज्यादा से ज्यादा कितना बुरा होगा. हमने एक्सपेक्ट किया था, हमारी उम्मीद थी कि 2 मिनट में ये प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए. बट हमारी एल्गोरिथम में ने हमारी उम्मीद से ज्यादा टाइम वहां पे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दिया, जो कि अच्छा नहीं है. बिग ओ नोटेशन डिनोट करती है, हम हमेशा ही बात करते हैं, वी ऑलवेज एवरी टाइम टॉक अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो, नाइदर द एवरेज केस, नाइदर द बेस्ट केस. वी ऑलवेज टेकन द वर्स्ट केस, ज्यादा से ज्यादा कितना ही बुरा हो सकता है. ऑलराइट, होप सो you understand what is the time complexity. Now we are find out there is some time complexity include. Alright, common time complexity. Constant time. That means the algorithm running time is fixed and does not change with the input size. Suppose we are going to search an element in a given array, and we find out the array in our first position, in our second position, and every time when we search the element, and every time we find out the element is present in the same location, constant time taken by the constant time. That means अगर हम लोग दो वैल्यूज को अप्लाई कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें हमारे पास 2 मिनट लगा है, फिर हमने ऑपरेशन थोड़ा चेंज किया, उसमें भी हमें 2 मिनट लगा, फिर हमने और ज्यादा चेंज किया ऑपरेशंस को, उसमें भी 2 मिनट लगा. दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टाइम हमें लग रहा है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए. सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी will be O1, big O of 1, worst case. And what is the logarithm time? Logarithm time means the running time increase logarithmically as the input size grow. Typically of algorithm that repeatedly divide the problem size in half. लोगरिथम टाइम हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? जहाँ पे कि आप इनपुट का साइज ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा टाइम क्या है वहां पे लोगरिथम जब लगेगा. जैसे कि हमने बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च में क्या होता है? एवरी टाइम वी हाफ द प्रॉब्लम. हर एक आइटरेशन के बाद हम प्रॉब्लम को हाफ हाफ पार्ट में बांटते जा रहे हैं, तो उसमें लोगरिथम टाइम हमारा लगता है. ऑलराइट, divide the problem size in half. And linear time. What is the linear time? The running time increase linearly with the input size. Suppose same problem, if we are searching for an element in an array, and we increase the size of array, so the given element always present in the last. We don't know if the given element is present or not in our array, and we have to search the element where, because our task is to search the element in an array.
if the array is present or not in the array, so we have to search from zeroth index to nth index. हमें कोई भी एलिमेंट को सर्च करना है अपने एरे में, और अगर वो एलिमेंट स्टार्टिंग में नहीं है, बीच में नहीं है, लास्ट में कहीं पर जाके, और हमने इंक्रीज कर दिया है साइज को एरे के, तो लीनियर टाइम भी आपका इंक्रीज होगा। मिलने को आपका एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे मिल जाए और मिलने को आपका एलिमेंट लास्ट तक ना मिले, बट वी हैव टू सर्च until the size of the array is finished. Have you understand these things? Now, next point is to logarithmic time. Logarithmic time. Divide the problem and solve and merge. That means we divide the big problem in multiple sub problems and solve individually. When we solve each sub problem, we merge the result. In this case, our time complexity will be big O of n log n. There are two examples of merge solve and quick solve. In merge solve, we divide the problem in multiple parts and solve individually and merge. Next point is to quadratic time. That means if we increase the size of the problem, then the algorithm running time is also increased. The running time grows quadratically with the input size, typically of algorithm with natural log. That means अगर हम लोग अपना इनपुट साइज बढ़ा देते हैं और हमारा एल्गोरिथम का साइज भी जो है वहां पे बढ़ जाता है, एल्गोरिथम जो भी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाली है उसका टाइम भी बढ़ जाता है, तो वहां पे हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक टाइम की, बिग ओ एन पावर ऑफ 2. Now we are going to discuss about space complexity. What is the space complexity? This measures the amount of memory an algorithm uses as a function of the input size. How much amount of space, how much amount of memory is taken by the algorithm. All right. Like time complexity, it is also expressed in big O notation. Space complexity includes both the space requirement for the input value or any additional space used for variable and data structure during computation. Space complexity, the amount of memory. Suppose if we have only two variables, then how much space is taken by the algorithm? And if we are taking any extra variable, then maybe the variable is not very much important, but only used for the computation, only used for our expression, all right, our operation. So how much space is taken by the algorithm? That means suppose we are going to swap two elements and we are taking any extra variable temp as a temporary variable. There is no need for temp variable, but only in our operation there is a need for temp variable. Temp variable taking any amount of space for any amount of time. Then this space is also included in the amount of memory which is taken by the algorithm. Have you understand this? All right. Where is the missing point? Why don't you understand the point? Can you explain? कहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या होता है कि कितना टाइम आपको लगा. सपोज वी आर गोइंग टू स्वैप टू नंबर. हमारे पास दो नंबर है और हमें उनका डाटा आपस में
एक्सचेंज करना है। हमें क्या करना है, हमें अपने डाटा को एक्सचेंज करना है। ए की जो वैल्यू है वो बी में चली जाए, बी की जो वैल्यू है वो ए में चली जाए। ये हमारा ऑपरेशन है। और ए और बी जितना मेमोरी ले रहे हैं वेरिएबल, वो तो हमारे पास है ही है, वो हमारा काउंट होगा एल्गोरिथम में कि कितना ज्यादा स्पेस उसने लिया। बट देयर इज ए अनदर वेरिएबल एज ए टेम्परेरी वेरिएबल, वी यूज टेम्प। टेम्प का हमारे पास जो रोल सिर्फ इतना है कि वो हेल्प कर रहा है आपको, उसमें परमानेंट कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। तो उस टाइम पीरियड में जो स्पेस, जो मेमोरी टेम्प ने ली, वो मेमोरी भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। वी इंक्लूड द memory also with A and B. Have you understand this point? All right. Very shortly, we are taking your practical classes. All right. Now, next point is to asymptotic notation. Symptotic notation help us to find out that how much time and how much space is taken by an algorithm. All right. Very first, we learn asymptotic notation is a mathematical tool used to describe the limiting behavior of a function. It allows us to express the performance of algorithm in a simplified manner, focusing on the growth rate rather than the exact time and space consumed. The most common typical of asymptotic notation are, alright, asymptotic notation is a mathematical tool. We taking an function and we perform some operation to the function. If the result is increase about our expectation, if the function is out of bound our expectation, that means we, if suppose we are taking an example, we are going to buy an home and our budget is 20 lakh, and the seller or the broker tell us to the home price is 25 lakhs, then 25 lakh is very much higher than our expectation. All right. एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हम लोग एक एल्गोरिथम का बिहेवियर चेक करते हैं कि हमारे पास क्या चीज है, कितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो भी हमने यहाँ पे इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको क्या मिलना चाहिए था, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया या कम आया, उसमें टाइम कितना ज्यादा लगा, उसमें स्पेस कितना ज्यादा लगा एल्गोरिथम को रन करने के लिए। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ notations like big O notation, theta notation. All right, big O notation describes the upper bound of an algorithm, time or space. That means time taken by the algorithm is very much higher than our expectation. All right, it represents the worst case scenario, indicate the maximum time an algorithm will take as the input size grow. That means हमने अपना साइज इनपुट का बढ़ाया और एल्गोरिथम को भी उतना ही टाइम लगा। जितना हमने साइज बढ़ाया उतना ज्यादा ही एल्गोरिथम ने टाइम लिया। तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ 20 लाख की थी, बट अमाउंट हमें पेड करना पड़ा 25 लाख, 25 लाख, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे लिए। ऑलराइट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट वर्स्ट केस, राइट? हैव यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? फॉर एग्जांपल, इफ एन एल्गोरिथम हैज ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O n square, it means that the running time will not exceed a constant multiple of
n power of 2 for sufficient large n. Alright, that means n may be anything. If we increase, suppose we are taking an integer number like 1 and we scale the number, that means 1, and we are taking another n equal to 2, then the O 4. So we are taking 6, then 6 into 6, 36. When we increase the size of input, the algorithm taken the time. Algorithm also increase the time for solving the given problem if we increase the size of the input. Have you understand this? All right. The mathematical definition is a function f of n is big O of gn if there exists positive constant c and n of O, such that function is less than of c constant gn. That means function is expectation value and constant dot gn is our actual value, which is very much greater than our expected value. All right. Okay. Now another point is omega notation. Omega notation, that means the same example I am taking. If we are expected, if our budget is 20 lakh for buying an home, buying a home, and the home price is 15 lakh, then which is very much good for us. Omega notation provide a lower bound for an algorithm time and space complexity. It represents the best case scenario, indicate the minimum time of algorithm. Minimum time of an algorithm will be taken for large input size. If an algorithm is big omega n, it means then the running time will be at least proportional to n for large of n. That means अगर हम इनपुट साइज अपना बढ़ा रहे हैं एल्गोरिथम में और एल्गोरिथम हमारी एक्सपेक्टेशन से, हमें ये एक्सपेक्टेशन थी एल्गोरिथम से कि वो इनपुट साइज के अकॉर्डिंग ही टाइम इंक्रीज करेंगे, बट एल्गोरिथम ने ऐसा नहीं किया। राइट, उसने कम से कम टाइम लिया, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी कम टाइम लिया एल्गोरिथम ने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। देन we take the time complexity as big omega of n. Have you understand this? The example in the case of a linear search algorithm. Linear search algorithm, the best case time complexity is omega of 1. When the target element is present in the first element in the list. अगर हमें कोई एरे में एक एलिमेंट को सर्च करना पड़ रहा है और वो एल्गोरिथम में एरे में आपका एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे है, देन इट विल बी बेस्ट फॉर अस। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हर एलिमेंट को सर्च नहीं करना पड़ा, वो हमारे लिए बेस्ट केस था। ऑलराइट, ए फंक्शन एफ ऑफ एन इज ओमेगा g of n if there exists positive constant c and n naught such that function greater than constant of g of n for all n greater n naught. ऑलराइट, लोअर बाउंड फंक्शन हमेशा ही हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे हमेशा ही छोटा रहा। ऑलराइट, सॉरी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे हमेशा ही जो हमारा एक्चुअल प्राइस आया है वो कम आया है। ऑलराइट, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, हमारा फंक्शन क्या था कि हमारी पैसे जो है इतने यहाँ पे खर्च होने वाले हैं किसी घर को खरीदने के लिए, बट सेलर ने हमें प्राइस बताया 15 लाख, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा था। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज थीटा नोटेशन। ऑलराइट, व्हाट इज थीटा नोटेशन? थीटा नोटेशन describe a tight bound for an algorithm time or space complexity. It provide both upper and lower bounds, meaning the function grows at least the same rate, both asymptotically and
Practically, if an algorithm is theta n log n, it indicates that its running time will be both proportional to and bounded above by n log of n function. That means average. Suppose we are expecting 2 point. We are find out the range. ऑलराइट, हमारा घर जो है 20 से 25 लाख में आ जाना चाहिए. आइदर 20 lakhs, either in 25 lakh, in between 20 to 25 lakh. And at the same time, we find out a home with the same price 23, which is average case. ऑलराइट, हमने एक रेंज फाइंड आउट कर लिया कि हमारा जो घर है 20 से 25 लाख में आ जाना चाहिए, और वो हमें 23 लाख में हमें मिल गया. तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एवरेज में हमें घर मिल चुका है. ऑलराइट, थीटा नोटेशन. ऑलराइट, example, my sort has a time quantity of theta of n log n in all cases, worst case, average case and best case. हर एक केस में, वर्स्ट केस में भी हमारा सेम रिजल्ट आया, बेस्ट केस में भी और एवरेज केस में भी सेम रिजल्ट. हैव यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? इफ एनीवन facing any problem, so you can ask me. I can explain the topic to you. All right, mathematical definition of the theta notation is a function f of n is theta of g of n if there exists positive constant c1 and c2 and n naught n and n naught n, such that c1 is constant 1 dot gn of n for all n greater than n naught. That means हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ना तो ज्यादा में मिला और ना ही ज्यादा कम में मिला. लाइक एवरेज में हमें हमारा घर मिल चुका है. Alright, there is a graph or the tree notation. Very first is the theta notation. Alright, in which function is belong to in between the given range. And another function, another second one graph is big O notation, in which shows the upper bound of the function. Our function is, our expectation is very much 20 lakh and our actual price is constant of gn, which shows the upper bound. All right, and last one is omega notation graph, in which our function, and our actual value is less than our expected value. All right, have you understand? Is there any problem, any issue? You can ask me. Okay, now another topic is efficiency classes. That means efficiency classes categorize algorithm based on their time and space complexity. Understanding these classes aids in selecting suitable algorithm on the basis of time and complexity. Suppose we have a problem. हमारे पास कोई problem है. We have a problem and we have to solve the problem. So we apply multiple algorithm for solve the problem, and one algorithm taking of 1, another algorithm taking of log n. Then which one is the best? So there is some classes are provided. On the basis of these classes, we select the algorithm which is very much best for our problem. All right. Efficiency classes categorize algorithm based on their time and space complexity. Understanding these classes aids in selecting suitable algorithm for specific problem. The primary efficiency classes include constant time. All right, algorithm that execute in a constant time, irrespective of input size,
such as accessing a specific element in an array. That means if we increase the size of element, if we increase the size of the input and the algorithm taken the same amount of time, constant time to solve the particular problem, then we can say the algorithm taken the time big O of n, constant time, which is the constant time. And the second one is algorithm time. Algorithm time big O of log of n. Efficiency algorithm that reduce the problem size dramatically with each step. That means in each step, the size of the solving the problem, the time taken for solving the problem is always dramatically reduced. ऑलराइट, हमारा जो टाइम है एल्गोरिथम का हर एक स्टेप के बाद कम होता जा रहा है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ऑलराइट, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हमने उसको सोल्व करने के लिए कोई एल्गोरिथम रन की, वी हैव ए प्रॉब्लम एंड वी आर run an algorithm to solve the particular problem and the problem taken the problem consistently reduce the time after each step, after each iteration, then we can say the time taken by the algorithm is logarithm time. All right, the example of logarithm time is binary search. If you are familiar with binary search, then you will understand. All right, then linear time. Linear time means we increase the size of algorithm and the algorithm. If we increase the size of input, if we increase the size of input and the algorithm taken the time increase and the algorithm increase the time also to solve the particular problem. Suppose if we have a problem and we increase the size a plus b, if we have a plus b two of variable and the algorithm taken 1 minute to solve the problem and we increase the size, that means we have now we taking four variables a, b, c and d, and the algorithm time is also increased, then we can say that the time taken by the algorithm is linear time. That means algorithm that process each input element once, such as linear search in an unsorted array. हमारे पास कोई एरे है, हम उसमें कोई एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं और हमने अपनी साइज को इंक्रीज किया अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेस ऑफ द इंक्रीजिंग साइज द एल्गोरिथम साइज इज आल्सो इंक्रीज। तो हम कहेंगे कि लिनियर टाइम हमें लग रहा है, हमें नहीं पता कितना टाइम लग रहा है, जितना हमने टाइम अपना साइज बढ़ाया उतना ही टाइम हमारा एल्गोरिथम भी बढ़ाती जा रही है। हैव यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? राइट, नाउ linear arithmetic time of n log n. Efficiency sorted algorithm like merge sort and heap sort that combine linear and algorithm operation. All right. Linear arithmetic time is a combination of linear search and logarithm operation. All right. In this, we divide the problem in sub problem and solve every sub problem individually. After that, we merge the result. Have you understand? All right. Now, our another point is exponential time. All right. Algorithm that solve problem by exploring all possible configuration, such as brute force solution to the traveling salesman problem. That means, suppose there is a 5 way to solve a single problem. Very first, we have to apply each way for the single problem, and we write down the time, how much time is taken by the
problem taken by the algorithm. We have 5 algorithm to solve a problem, and we apply each algorithm to the problem, and which write down the time. So, and after that, we find out the which is the best. So, at that point, we talk about the exponent time. We can say the algorithm is taking the exponent time. That means हम लोग एक एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे जो कि मल्टीपल तरीकों से उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। वेरी फर्स्ट उसमें क्या होगा, हमारा टाइम लगेगा कि हमने यहाँ पे 5 तरीकों से सोल्व किया। उस 5 तरीकों से सोल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टाइम लगा, कुछ ना कुछ स्पेस लगा हमारे मेमोरी में, हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, और उसके बाद हमने फाइंड आउट किया कि कौन सी एल्गोरिथम आपके लिए वैल्यूएबल है, कौन सी एल्गोरिथम ने सबसे कम टाइम लिया। तो उस केस में हमें नहीं पता कि कितना टाइम हमें लगने पा रहा है वाला है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी एल्गोरिथम ने एक्सपोनेंशियल टाइम वहां पे लिया। ऑलराइट, लाइक एन एग्जांपल, सपोज we are going anywhere. Currently I am present in here and we are going to Delhi. There is multiple ways to go to visit Delhi. Either I am taking railway, either I am use bus, either I am use my personal vehicle. All right, so very first we apply all the things. We use how much we use railway, then we find out there is a 400 charge for railway, and we use our personal vehicle and we find out there is a 300 charge, 300, ठीक है, and again we use bus and there is found 1000, bus charge 1000. Then after that we use our personal vehicle, because in our personal vehicle, when we use our personal vehicle, then the my investment is only 300. We use only 300. Have you understand now? सपोज हमें यहाँ से कहीं जाना है, मैं यहाँ से दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो दिल्ली जाने के हमारे पास काफी सारे तरीके हैं। हम रेलवे में जा सकते हैं, हम लोग अपने पर्सनल व्हीकल पर भी जा सकते हैं, हम लोग यहाँ से बस का यूज भी कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रैपिडो वगैरह का भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हमने क्या देखा, सबसे पहले हम रेल से गए, हमें वहां पे कुछ अमाउंट लगा, हमारा अमाउंट टाइम लगा वहां पे। ठीक है, कितना हमने टाइम लिया, कितने हमारे पैसे वहां पे लगे, और सेकंड हमने लिया, हम अपने पर्सनल व्हीकल से गए, उसमें हमारा कितना टाइम लगा और कितने पैसे हमारे खर्च हुए पेट्रोल वगैरह में। फिर हमने बस का यूज करके देखा कि भाई बस में कितना पैसा और कितना टाइम आपका लगता है। फिर हमने रैपिडो वगैरह में करके देखा। उसके बाद हमने देखा कि सबसे कम टाइम हमें कितना लगा। सबसे कम टाइम हमारा 2 घंटे का था, हमारे पर्सनल व्हीकल में था, हमारा रेलवे में लगा, और कितना पैसा लगा हमारा, हमें पैसा भी देखना है। ठीक है, तो इसमें पहले तो हमारा सारा टाइम भी लगा, एक तो हमें वो टाइम भी इंक्लूड करना है जो कि हमारा लगा, और वो पैसा भी इंक्लूड करना है जो कि हमारा लगा। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद जब भी हम जाएंगे तो हम अपने पर्सनल व्हीकल से ही जाएंगे। हैव यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ऑलराइट, आई थिंक you understand this point now. Now another topic is algorithm design. Algorithm design means how to you design an algorithm for a given problem. Algorithm design is a fundamental aspect for computer science that involves creating a step-by-step procedure or formula for solving a specific problem or performing a computation. The process encompasses various techniques, methodologies, and consideration to ensure that the algorithm efficient, effective and applicable to the problem at hand. I mean, कि आप कैसे एक एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे, हाउ टू यू डिजाइन ए न्यू एल्गोरिथम। राइट, we have to point out many things like how much time taken by the algorithm,
how much space taken by the algorithm, and is the algorithm is also applied to the new problem with little bit of modification. All right. So there is some point to how we design an algorithm. यहाँ पे कुछ बातें हमें ध्यान देना है। जब भी हम लोग कोई एल्गोरिथम बनाएंगे तो वहाँ पे काफी सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो उन सभी चीजों में क्या क्या चीजें हमारे पास है हमें यूज करना है। ठीक है। की प्रिंसिपल ऑफ एल्गोरिथम डिजाइन, करेक्टनेस, दैट मीन्स if we applying an algorithm, if we design an algorithm, then the algorithm must provide the correct result to you on the basis of input, and with each input the same algorithm provide the correct result. The most critical aspect of an algorithm is its correctness. An algorithm must provide the right output for all possible input. To ensure correctness, it is essential to rigorously prove that the algorithm works as intended, often through formal verification or test. तो करेक्टनेस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो एल्गोरिथम आपके लिए करेक्ट है? वेरी फर्स्ट, logical step by step that the algorithm always gives the correct result. All right. Rigorously prove का मीनिंग जो होता है स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम गिवन द करेक्ट रिजल्ट, एंड फॉर्मल वेरिफिकेशन दैट मींस वी अप्लाई mathematical operations. All right. And test means we apply multiple input to a single algorithm. Have you understand this point? All right. Now another point is efficiency. Efficiency means refer to the resources requirement. All right. Efficiency refers to the resources required by the algorithm, primarily in terms of time and space. The goal is to minimize this space, particularly for large input size. Time complexity is often analyzed using asymptotic notation to provide upper and lower bound on performance efficiency. Efficiency means how much resource we always take care of about the resources. We always work, we always use minimum resource to solve a particular problem. Either we increase the size of problem, all right, if we are going to increase the size of problem, and we have to take care of the necessary resources. जो भी हमारे पास रिसोर्स है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, और हमारे पास कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जो जिन रिसोर्सेज का हमने यूज किया था, ऑलराइट, द सेम रिसोर्सेज वी आल्सो यूज फॉर द बिग प्रॉब्लम, टू सोल्व द बिग प्रॉब्लम, ऑलराइट, and we also have to take care of how much time taken by the algorithm and how much space taken by the algorithm to solve a particular problem. Next point is to simplicity. Simplicity means the algorithm is understandable and clear to each of you. जो भी आप एल्गोरिथम बनाने वाला हो वो क्लियर हो, वो आसान हो, अंडरस्टैंडेबल हो बाय एवरीवन, राइट? A well-designed algorithm should be simple and easy to understand. Complexity can lead to implementation difficulties and increase the likelihood of error. Simple algorithms are often easier to debug and maintain. हमारी जो algorithm है वो very simple. Okay? If we are design an algorithm, then our goal is to we write down a simple algorithm and very simple and understandable by everyone. If we are going to design an algorithm, and if we provide the size, if we increase the size of the algorithm, then the algorithm can
लीड द डिफिकल्टीज। सपोज करो हमने कोई डिफिकल्टीज हुई, हमने कोई साइज इंक्रीज किया, तो हमारी एल्गोरिथम उस पर भी वर्क करनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। सपोज करो हमें कोई एरर आया, सपोज करो हमने क्या किया, a plus b. If we are write down an algorithm for a plus b, and now we are going to change. If we are going, we are taking another problem like a into b. Then there is a step. There is a only need to change only single step, not complete algorithm. All right. Okay. Generality. ठीक है. Generality. A good algorithm should be applicable to a wide range of problem. जो भी आप एल्गोरिथम लिखने वाले हो, the same algorithm is used for multiple problem. General algorithm can be modified or adapted for different scenario. ठीक है. मॉडिफाइड भी हो सके और अडेप्ट हो सके अलग अलग सिनेरियो में, विदाउट सिग्निफिकेंट चेंज, बिना किसी बड़े चेंज के. ऑलराइट. हमारी जो एल्गोरिथम हम लिखने जा रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि आप अगर मल्टीपल प्रॉब्लम भी लेके आते हो तो वो भी आप इजिली सोल्व कर सको. राइट. एंड robustness suppose we have an algorithm and there is a human error. If we provide the incorrect input, suppose we write down an algorithm a divide b. If we use 5 divided by 2, then the result will be 2. And if we divide 5 divided by 0, then our algorithm can handle such type of problem. There is no need to human to solve the given problem. All right. A algorithm should be able to handle unexpected input or error gracefully. All right. Robustness ensure that the algorithm continue for function correctly even in edge cases. अगर हमारे पास सपोज करो हमने कोई प्रॉब्लम दी, ठीक है, कोई एल्गोरिथम लिखी और हमने वहां पे कुछ इनकरेक्ट इनपुट पास कर दिया. इफ वी पास एनी इनकरेक्ट इनपुट, we don't know what we pass, just pass. So algorithm have the capability to solve to handle the such type of input. Have you understand these things, students? All right. Now our next step is to common algorithm design techniques. There are some techniques which we use to design an algorithm for our problem. Alright, several established techniques are commonly used in algorithm design, each suited to different type of problem. Alright, okay. Very first is divide and contract. Divide, that means we divide our big problem into small sub problems. Alright, and solve individually, and after that we merge the result. Break a problem into smaller sub problem and solve them independently and combine the result. For example, merge sort, quick sort, flip sort. Alright, and dynamic programming. In dynamic programming, solve overlapping sub problem efficiency by storing result to avoid recalculation. Okay, what is the meaning of this line? Suppose if we have a big problem and we find out similar type of sub problem, we divide the problem, we find out similar type of sub problem. So we store the result of the problem which we already solved. There is no need to solve the same problem again and again.
to solve the big problem. The very famous example is Fibonacci series. सपोज करो हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी और हमने उसे सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया। अब हम क्या देखते हैं, सब प्रॉब्लम बनने के बाद दो या चार प्रॉब्लम हमारे पास ऐसी है कि जिनका रिजल्ट सेम आने वाला है या फिर जिनको हम सेम तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो हम उस सब प्रॉब्लम को स्टोर करके रखेंगे कहीं पे, जिसका कि हमें पता है कि इसका रिजल्ट ये आने वाला है। और इन फ्यूचर इफ वी आर यूज द सेम, और हमें आगे जाके जब हम सोल्व कर रहे हैं बड़ी प्रॉब्लम को, हमने ये फाइंड आउट किया कि इसमें भी सेम ही रिजल्ट आएगा। और ऐसी ही प्रॉब्लम हमने पहले देखी हुई है, अभी कुछ टाइम पहले हमने इसी की सब प्रॉब्लम को सोल्व किया, तो हम उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। हमें बार बार सिंगल कैलकुलेशन को करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू recalculate the same operation. We store the result of the operation, and when there is a need to recalculate, so we call the same result. Have you understand? All right. And greedy algorithm. All right. Build solution step by step by choosing the locally optimized choice. We always greedy for the best solution. All right. We always greedy for the best solution. In greedy algorithm, तो हमारे पास मल्टीपल वे होंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट केस फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, हम हमेशा छोटे से छोटा और हर एक स्टेप पे फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, हर एक स्टेप पे हमें क्या रहेगा, सपोज करो सेम एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, वी आर टेकिंग द सेम एग्जांपल, सपोज वी हैव टू गो टू दिल्ली एंड वी आर टेकिंग द टू स्टेप। ऑलराइट, वी देयर आर सो मेनी वेज टू गो टू दिल्ली, एंड वेरी फर्स्ट we going from my home to railway station, and someone taking 20 rupees from me and another one taking 10 rupees for me. Very first we store the result 10 and 20. After that we taking the railway, we use rail, and how much amount of time taken by the railway and how much amount of time taken by the bus if we are using the bus also, and we store the result. If we find out from my home to bus stand only 10 rupees, I have to use only 10 rupees, and from my home to railway I'm using 20 rupees. From my home to bus stand 10 rupees, and from my home to railway 20 rupees. So we always choose the 10 rupees. After that we taking the bus, and bus taking the 200 rupees. So we have 210 rupees. And when we use railway, railway taking the 100 rupees, then we have 120 rupees. So we choose railway. That means each and every time we calculate and always use the best way. Hope so you will understand. हमें क्या करना है, हर एक स्टेप पे हमें कैलकुलेशन करनी है कि हमें यहाँ से बस स्टैंड तक कितने रुपए लगे, हमें यहाँ से रेलवे तक कितने रुपए लगे, बस लेने के बाद मुझे कितने रुपए लगे और रेलवे लेने के बाद मुझे कितने रुपए लगे। ठीक है, अगर मैं रेलवे का यूज करता हूँ, बस का यूज करता हूँ, कितने रुपए लगे, और उनका कैलकुलेशन करके मैं फाइंड आउट करूंगा कि जिस भी पाथ में मुझे कम रुपए लग रहे हैं तो वो मैं यूज करूंगा। यस प्लीज। ओके, नाउ backtracking that means if you are write down an algorithm and there is a way to backtrack. Okay, incrementally build solution and discard invalid one and pin. That means backtracking means you use in greedy algorithm backtracking. सपोज हमने क्या किया, हम एक रास्ते पर जा रहे थे, कुछ टाइम बाद हमें पता चला ये पाथ हमने गलत चूज किया। सपोज वी आर गोइंग एनीवेयर एंड आफ्टर दैट
we realize we chose the wrong way. So we have to take backtracking. We use backtracking. जब हमें पता चला कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है तो हम वहां से वापस आ सके. And again we use another way. Again and again we follow the same step. That means backtracking. Okay. Now next step is brute force. Brute force. In brute force, we search. We use all the possible solution. We try to all the possible solution. After that, we choose anyone. Have you understand these things? All right. Now, factor influencing algorithm design. There are so many factor to influencing of algorithm design. एक algorithm को कैसे आप डिजाइन करोगे? Very first, problem characteristics. That means we have to understand the nature of the problem. और किस तरह की प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम, किसको आप सोल्व करना चाहते हो. Input size. What is the input size? All right. The size of the input data can be significantly affect the choice of the algorithm. आपके इनपुट का साइज भी हेल्प करता है आपको किस तरह की एल्गोरिथम को आपको चूज करना है. राइट. सेकंड वन, लिमिटेशन. हाउ मेनी रिसोर्सेज डू यू हैव and which type of resources do you have. According to our resources, we choose the correct algorithm to solve the particular problem. If these resources are applicable for the algorithm, all right, and user requirement. What is the your user requirement? If we don't know the requirement of the user, then how do you build, how do you design an algorithm? अगर आपको यूजर की प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो कैसे आप पता करोगे कि उसकी क्या, कैसे आप एल्गोरिथम को डिजाइन करोगे. एंड प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम. कौन सी प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम आप यूज करने वाले हो, ठीक है ना. each algorithm perform different type of result on the basis of the program लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाले हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी सेम एल्गोरिथम अलग अलग रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी. तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा. होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड. ऑलराइट. नाउ द टाइम इज टू टेक द नेक्स्ट क्लास फॉर यू. ऑलराइट. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. नाउ you can leave the class. Every everyone can leave the class. And if you are taking, if you want this PPT, you can ask you from your mentor. Your mentor definitely share the PPT with you. Good night to all of you. Thank you, sir. Shall I end the class now, sir? Yes, ma'am. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you.